ओके, तो कल हम लोगों ने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हमको देखना है व्हाट इज थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थिन प्रिज्म मतलब अ प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिंग एंगल, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये और ये दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे। प्रिज्म अगर याद है, अगर याद नहीं तो वापस याद दिलाता हूँ। दिस वाज prism that we have studied। तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, दो साइड सरफेसेस, एक बॉटम बेस, राइट। ये और दूसरा साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये जो ऊपर की लाइन है रिफ्रैक्टिंग एज, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ज्वाइन करती है। ये जो एंगल है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। ये जो बॉटम है दैट इज बेस। तो जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल ए ये 10 डिग्री से कम हुआ, लेस देन 10 डिग्री हुआ, such prisms are called as thin prisms। Okay, so any prism whose refracting angle is less than 10 degree is called as refracting prism, is called as thin prism। Okay, any prism whose refracting angle is less than 10 degrees is called as thin prism। Then what we have studied yesterday was mu, मतलब refractive index of material of prism is given by sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2। ये हम लोगों ने कल ही डिराइव किया, प्रिज्म फॉर्मूला हुआ था इसको, राइट, करेक्ट। सिंस फॉर अ थिन प्रिज्म, फॉर अ थिन प्रिज्म a is small, डेल्टा m तो वैसे भी स्मॉल है, क्योंकि मैं बोला ही था इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम वैल्यू है वो। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई टू। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा, राइट। तो साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई टू अप्रोक्सीमेटली, क्यों? क्योंकि a स्मॉल डेल्टा m स्मॉल, right? Also, what we can write is sine of a by 2 is approximately equal to a by 2, correct? Therefore, refractive index of material of prism mu will be equal to a plus delta m by 2 upon a by 2, क्योंकि साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू इज a प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ऑफ a बाई टू इज a बाई टू, टू टू कैंसल, तो ये आपको मिल गया a प्लस डेल्टा एम बाई ए। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज a प्लस डेल्टा एम बाई ए। मतलब म्यू टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। मतलब डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू a माइनस a, राइट। मतलब म्यू माइनस 1 into a, right? But what we know is delta m is one of the values of delta। डेल्टा m मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कोई एक वैल्यू है ना। आई कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे जैसे एक प्रिज्म पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, रे ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 90, इट कैन बी 20, इट कैन बी 21, 25, 32, कुछ भी हो सकता है वैसे, बट है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सिमिलरली डेल्टा एम is one of the values of delta। Therefore, what you can write is delta is equal to a times of mu minus 1। करेक्ट। मैंने आपको कल बताया था that you will notice one thing, जब हमने वो लिखा था रिलेशन mu for v, mu for red, ऐसा रिलेशन लिखा था ना, ग्रेटर देन लेस देन समथिंग समथिंग,
तब मैंने आपको बताया था कि आप डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 देखोगे आगे जाके, आ गया, करेक्ट. This is one method of obtaining this relation. This is one method. Okay. So I will repeat this method and I'll also tell you कि आपके टेक्स्ट बुक्स ने कौन सा मेथड यूज किया है to derive the same thing. Good. तो for thin prism, thin prism का मतलब क्या होता है that A refracting angle of prism is less than 10 degree. Already delta m small था, अब A भी स्मॉल हो गया. इसका मतलब साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m by 2 is approximately equal to A plus delta m by 2 for small angle. Also, sine of A by 2 is approximately equal to A by 2 for small a. Therefore, prism formula says that mu is sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. So this is equal to A plus delta m by 2 upon A by 2, 2 cancel. Therefore, refractive index mu is nothing but A plus delta m by A. Therefore, mu A is equal to A plus delta m, and therefore delta m is equal to mu A minus A, which is equal to A common mu minus 1. But delta m ये एंगल ऑफ डेविएशन का कोई एक वैल्यू है. एंगल ऑफ डेविएशन हमने देखा था, वी हैव सीन दिस. डेल्टा आई जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, डेविएशन कम हुआ, फिर एक वैल्यू के बाद बढ़ गया, और ये जो वैल्यू थी मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, हमने इसको बोला था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. पर ये डेल्टा एम जो है ये तो एंगल ऑफ डेविएशन का एक वैल्यू ही है. तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा एम आई कैन जस्ट राइट डेल्टा, दैट्स फाइन. सो यू हैव फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 फॉर थिन प्रिज्म. ओके, गुड. देन दिस वाज मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 में जो आपके बुक्स में दिया है, what you can do is मान लेते हैं ये हमारा थिन प्रिज्म है, एंगल स्मॉल है, थिन प्रिज्म है. देन वी हैव अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हियर, वी हैव नॉर्मल. ओके, प्रिज्म करता क्या है? प्रिज्म का काम ये है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे जो है, उसको बेस की तरफ मूव करना, टू बेंड इट टुवर्ड्स द बेस, राइट. The role of prism or refracting surface is to bend the incident ray towards the base. That is important thing, correct? Good. तो अगर मैंने we know this is I, this is basically not this but this angle is R1. अगर आपको याद होगा तो, if you remember, क्योंकि ये thin prism है तो I am not able to show anything over here. अगर आपको याद होगा हम लोगों ने कल क्या किया था, हम लोगों ने एक प्रिज्म लिया था. मान लो ये प्रिज्म है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम अगेन. ये रे ऑफ लाइट था, ये नॉर्मल टू द सरफेस था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट बेंड हुआ, राइट. यहाँ पे और एक नॉर्मल था, दिस एंगल वाज कॉल्ड एज R1, दिस एंगल वाज कॉल्ड एज R2, एंड देन इट बेंड्स अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस एंगल वाज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये हमारा कल के लेक्चर में हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, राइट. अभी अगर प्रिज्म थिन हुआ, थिन प्रिज्म मतलब ये एंगल छोटा हो गया, राइट.
और अगर मैंने if we apply Snell's law on this surface AB, if I apply Snell's law on surface AB, I will get mu1, क्योंकि ये mu1 है, which is air basically, sin I equal to mu2, which is refractive index of material of prism, sine of R1. So I will get mu2 is equal to sin I by sin R1. क्यों? क्योंकि mu1 1 है इसलिए, correct? But for thin prism, it turns out that, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो कल हम लोगों ने R इज इक्वल टू a/2 ऐसा हम लोगों ने कल ही डिराइव किया है, राइट? राइट। अगर a स्मॉल हुआ, इफ a इज स्मॉल, दिस implies, दिस मीन्स अगर a स्मॉल है तो R स्मॉल है, इस रिलेशन से ओवर हियर R इक्वल टू a/2, a स्मॉल तो R स्मॉल, सिंपल। बट यू रिमेंबर हमने बोला था कि ये जो R है ये R1 और R2 दिस इज इक्वल टू R, बराबर, गुड, राइट? बट अगेन इफ यू रिमेंबर, अगर R1 R2 स्मॉल है इसका मतलब I भी स्मॉल होगा, मतलब सिर्फ थिन प्रिज्म लेने की वजह से, A की वैल्यू स्मॉल लेने की वजह से I, R1, R2, E सब स्मॉल हो गया, सब स्मॉल हो गया, मतलब आई कैन राइट दिस एज I upon R1 because sine of I is approximately equal to I for small angle of incidence, sine of R1 equal to R1 for small angle of refraction R1, good, clear? Then what does this means? This means, इसका मतलब ये होता है mu2 is equal to I by R1 मिला, इसका मतलब ये होता है I is equal to mu2 R1। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड सरफेस पे, मतलब AC सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा mu1 sin E इक्वल टू mu2 sin R2, मतलब मुझे मिलेगा mu1 की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे मिलेगा mu2 इज इक्वल टू sin E बाय sin R2, मतलब मुझे मिलेगा E बाय R2, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया E और R2 आर स्मॉल, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन E इज E, देयरफॉर मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू mu2 R2, करेक्ट, राइट? So that means I plus E is equal to mu2 R1 plus mu2 R2, mu2 R1 plus mu2 R2, मतलब मैं mu2 कॉमन निकाल लेता हूं, R1 plus R2, right? But wait a minute, have we not written that R1 plus R2 is, हमने कुछ लिखा है R1 and R2 के बारे में, R1 plus R2 was A, अगर याद होगा तो हमने डिराइव किया था कल, तो हमको क्या मिल गया, I plus E is equal to mu2 A since R1 plus R2 is equal to A, हमने कल लिखा। Also if you remember, I plus E was A plus delta, ये भी कल हमारा आया था, right? Therefore A plus delta is equal to mu2 A, therefore डेल्टा इज इक्वल टू mu2 को मैं म्यू लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस mu2 इज म्यू, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो मेथड 1 से भी आपका वो आया एंड मेथड 2 से भी आपका थिन प्रिज्म के लिए वही इक्वेशन आया, करेक्ट?
सो द वे यू वांट, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। ओके, मैं मेथड 2 वापस रिपीट कर रहा हूँ। इन मेथड नंबर 2 हमने क्या किया, हमने मेथड 2 में सिर्फ इतना ही बोला है कि हम लोग स्नेल्स लॉ प्रिज्म के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे अप्लाई करेंगे। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो मुझे मिलता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। मैं अगर दूसरे मतलब AC सरफेस पे अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है μ1 sin E इक्वल टू μ2 sin R2। बट प्रिज्म एयर में रखा था तो μ1 की वैल्यू 1, तो sin I इज इक्वल टू μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मैं सिर्फ म्यू बोल देता हूँ उसको, sin R1। यहाँ पे भी वही sin E इज इक्वल टू म्यू sin R2। तो मुझे मिल गया म्यू इज इक्वल टू sin I बाय sin R1, करेक्ट, एंड म्यू इज इक्वल टू sin E अपॉन sin R2। बट what we know is R1 equal to R2 equal to R, करेक्ट। ओके, ऐसा नहीं भी करना तो डजंट मैटर, आपके ऊपर है वो। बट आई कैन से फॉर थिन प्रिज्म, for thin prism, what you can say is I, R1, R2, E are all small. Therefore, mu is equal to I by R1। क्यों? क्योंकि sin I is I and sin R1 is R1, sin E is E, and this is sin R2 is just R2, or mu is equal to E by R2। Therefore, I is equal to mu R1, E is equal to mu R2। So I plus E is equal to mu R1 plus mu R2, मतलब mu कॉमन R1 प्लस R2, बट हमने R1 प्लस R2 को A पहले ही डिराइव किया है while we were going through prism formula। Also हमने I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो आई विल राइट A प्लस डेल्टा इक्वल टू म्यू A। Therefore, delta is equal to mu A minus A, that is equal to mu minus 1 into A। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली इफ A is less than 10 degree for a thin prism। You cannot use this anywhere else। टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे यूज करने की, राइट, करेक्ट, गुड। So this was all about thin prism। So let's write down what is a thin prism and then we'll see next topic। मैं दोनों ही मेथड बता दूंगा आपको बिकॉज इट इज अप टू यू द वे यू वांट, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। So I'm going to clear everything and then we are going to start over again। Okay, so we are going to start with thin prisms। So we'll start with defining what is a thin prism first, and then we will be deriving equation for thin prism। So as I told you, prisms having refracting angle
refracting angle less than 10 degrees, मतलब A is less than 10, are called as thin prisms. Okay, good. Then method 1. We know that prism formula is given by prism formula is mu equal to sine of A plus delta n by 2 upon sine of A by 2, right? But A and delta m both are small, therefore sine of A plus delta m by 2 is approximately equal to A plus delta m by 2, and sine of A by 2 is approximately equal to A by 2. Therefore, mu, which is refractive index of prism, so therefore from 1 and 2, mu is equal to A plus delta m by 2 upon A by 2. Therefore, mu is equal to A plus delta m by A. 2 cancel हो गया. Therefore, mu times of A is equal to A plus delta m. Therefore, delta m is equal to A common mu minus 1. But delta m is one of the values of delta. Therefore, delta is equal to A mu minus 1. Equation number 3, right? So this equation number 3 is strictly valid for a thin prism. You cannot apply it anywhere else. It is strictly valid for a thin prism. Okay. Method 2. So method number 2, right? We know that if A is small, then R, which is A by 2, is also small. But I already told you, but R is equal to R1 is equal to R2, right? These all are small, right? If R1 and R2 are small, then I and E, क्योंकि स्नेल्स लॉ जब लगाते हो तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1 और म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2 आता है. तो अगर R1 R2 स्मॉल है तो I और E को स्मॉल होना ही है. Then I and E are also small. Therefore, applying Snell's law on both
refracting surfaces refracting surfaces of prism. We have what we have is mu is equal to sine I by sine R1, that is approximately equal to I by R1, and mu is equal to sine E upon sine R2, that is approximately equal to E by R2. Therefore, what we have is I equal to mu times of R1 and E is equal to mu times of R2. Therefore, I plus E is equal to mu times of R1 plus mu times of R2. That is equal to mu common R1 plus R2. Therefore, I plus E is equal to mu times of A. Since R1 plus R2 is equal to A. But let me call this equation number 4. But what we know is I plus E is equal to A plus delta. ये हम जब प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तब हमने किया था. Therefore, from 4 and 5, what we have is A plus delta is equal to mu A. Therefore, delta is equal to A mu minus 1. तो हमने ये थिन प्रिज्म के लिए दो अलग अलग मेथड से सेम फॉर्मूला डिराइव कर लिया. You can use any of these safely. No one will ask you कि ऐसा क्यों किया, because both are valid basically. I personally feel पहला मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि हमने प्रिज्म फॉर्मूला तो ऑलरेडी करके रखा है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट थिन प्रिज्म. नाउ we want to study a topic which is called as angular dispersion and mean deviation. तो अब ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है फिर? इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज दिस एंगुलर डिस्पर्शन? लेट्स सी. एंगुलर dispersion and mean deviation. Okay, if you remember, चलो वापस डायग्राम ड्रॉ कर ही देते हैं क्योंकि वैसे भी हमको जरूरत पड़ने वाली है इसकी. इफ यू रिमेंबर, हमारे पास प्रिज्म था. प्रिज्म का ये प्रिंसिपल सेक्शन है. दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म. And I already told you what is principal section of prism. ये आपको already पता है. Then हमारे पास एक white light इस पे इंसिडेंट हुआ था, करेक्ट. अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा जाता, राइट. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, करेक्ट. बट प्रिज्म है तो लाइट बेंड होगा. बट as we have seen earlier, और as we know, हमको क्या पता है? हमको पता है कि इवन दो प्रिज्म का मटेरियल एक ही मटेरियल है, राइट, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम c by v.
v डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, क्योंकि v वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका मतलब हर एक कलर का रिफ्रैक्शन अलग होगा, इसका मतलब हर एक कलर का डेविएशन अलग होगा। ये हमने देखा है ऑलरेडी, उसको में डिस्पर्शन भी हुआ था। तो हमने ये देखा था कि रेड कलर के लिए सबसे कम डेविएशन होता है, एंड ब्लू मतलब वॉयलेट, इनफैक्ट वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, राइट। येलो के लिए इन बिटवीन होता है। ओके, देन अगर आपको याद है, ये जो एंगल था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन was angle of deviation for violet, and ये जो एंगल है of red color with respect to original direction is angle of deviation for red, right? Good. Then angular dispersion का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब ये, the angular separation between the two extreme colors, angular separation between two extreme colors मतलब डेल्टा V minus डेल्टा R, that is defined as angular dispersion or denoted by delta VR या फिर capital delta. The angular separation between two extreme colors, extreme color कौन सा होता है? Red and violet, is defined as angular dispersion. But delta is equal to A into mu minus 1, अभी हमने डिराइव किया था। Therefore डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर विल बी इक्वल टू ए। अभी ए वॉयलेट मत कर देना, क्योंकि ए ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी है, ए ये प्रिज्म का एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। ओके, म्यू वी माइनस 1, क्योंकि हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट, एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस 1। Therefore, angular dispersion capital delta is delta V, which is A mu V minus 1 minus A mu R minus 1, मतलब A common, mu V minus 1 minus mu R minus minus plus 1 minus 1 plus 1 cancel हो गया। Therefore, angular dispersion which was denoted by delta VR or just by capital delta turns out to be A mu v माइनस म्यू आर। तो ये हो गया बाय डेफिनेशन एंगुलर डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। व्हाट इज मीन डेविएशन? देखो, हमको पता है रेड कलर और वॉयलेट कलर ये दो एक्सट्रीम मतलब एंड के कलर्स है, राइट। फिर वॉयलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, ऐसा आता है ना, येलो ऑरेंज एंड सो ऑन, करेक्ट। विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। येलो जो कलर है वी टेक इट एज अ मीन, ये आपका जो मीन वैल्यू आप सीखते हो मैथमेटिक्स में वो मीन नहीं है। फिर आप बोलोगे ये वैल्यू 3000, ये वैल्यू 7000, ओके, मीन 5000।
राइट, और येलो 5800 के आसपास आता है, ओके। बट हम लोग मीन येलो कलर को मानते हैं, वी से दैट येलो इज मीन, ऐसा मानते हैं हम लोग, ओके राइट। तो येलो हम लोग मीन मान लेते हैं। तो जो येलो कलर का डेविएशन होगा, द डेविएशन ऑफ येलो कलर इन दैट स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो येलो कलर हमने लिया था, this deviation of yellow color delta y is called as mean deviation, and क्योंकि इसको हमने मीन अज्यूम कर ही लिया है, तो फिर डेल्टा वाई, हाउ डू यू फाइंड आउट मीन वैल्यूज? पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू बाय 2, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड कि येलो कलर इज मीन। तो हाउ डू यू फाइंड आउट मीन वैल्यूज? फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू बाय 2। तो ये हो गया मीन डेविएशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू बाय फॉर्मूला ऑफ थिन प्रिज्म, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ म्यू वाई माइनस 1। तो ये दिस क्वांटिटी ओवर हियर इज डिफाइंड एज मीन डेविएशन, डेविएशन ऑफ द मीन कलर विच इज कंसिडर्ड टू बी अज्यूम्ड टू बी टेकन टू बी येलो, उसका डेविएशन मतलब मीन डेविएशन। गुड, अब ये कर ही रहे हैं तो एक लास्ट चीज है वो भी डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। मतलब बेसिकली the capability of a prism to disperse, to split the white light into its constituent colors is called as dispersive power. It is defined as the ratio of, ये जो है it is the ratio of angular dispersion delta to that of mean deviation, right? So dispersive power is the ability of a prism to disperse the light into constituent colors, and it is defined as the ratio of angular dispersion to that of mean deviation, and delta is nothing but delta v minus delta r by delta y। but delta v minus delta r यहाँ पे हमने ये डिराइव किया था a टाइम्स ऑफ म्यू v माइनस म्यू r, एंड डेल्टा y अभी लिखा हमने नीचे a टाइम्स ऑफ म्यू y माइनस 1, a कैंसिल। तो डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ओमेगा ऑप्टिक्स में आप डिस्पर्सिव पावर बोल के डिफाइन करते हो, राइट। इजी है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डिविएशन। डेल्टा डिफाइन किया है डेल्टा वी बाई डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन डिविएशन तो डेल्टा वाई है ही, बट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया, और फाइनली क्या आया, ए टाइम्स ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर, वो सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा वाई क्या था, ए टाइम्स ऑफ म्यू वाई माइनस 1 था, सॉल्व कर दिया तो हमको मिल गया डिस्पर्सिव पावर एज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डन, गुड। तो इतना अब हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। don't want to erase that yellow color, but हो गया, कोई बात नहीं, we will draw it again। all right, just because we will define mean deviation, and that's why I am drawing this thing over here। this is delta y, by the way, this was a angle of prism। okay, so we'll start with first defining what is angular dispersion,
Okay, so as we know that if a polychromatic मतलब a light having many colors, polychromatic beam is incident on a prism, the emergent beam consists of all the individual colors angularly separated. ओके, राइट। तो जैसे मैंने डायग्राम में बताया है, पॉलीक्रोमैटिक मतलब व्हाइट लाइट। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आई विल राइट डाउन, इफ अ पॉलीक्रोमैटिक बीम मतलब आई एम सेइंग व्हाइट लाइट is incident on a prism, the emergent beam consists of individual colors which are separated angularly, okay, as shown in figure. Okay, then the angular separation between the extreme colors, in our case it is red and violet, is defined as angular dispersion, correct? So the angular separation between extreme colors is defined as angular dispersion. This is white light or polychromatic light. Okay, good. Then therefore angular dispersion is डेल्टा वी आर या फिर कैपिटल डेल्टा या फिर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, राइट? इक्वेशन नंबर 1, बट delta is equal to a times of mu minus 1, therefore delta v is equal to a mu v minus 1 and delta r is equal to a mu r minus 1, equation number 2. Therefore, substituting equation 2 in 1, that is from 1 and 2, we have angular dispersion delta Vr, or denoted by capital delta, is equal to A times of mu V minus 1 minus A times of mu R minus 1. Therefore, this is equal to A mu v माइनस म्यू आर। मैंने क्या किया, ए कॉमन निकाल लिया, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3, दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्शन आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सिंप्लीफाइंग। so I have already written directly in simplified way, a कॉमन निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, you will get this equation, right? Good. Then we want to define what is mean deviation. Okay, so let us define what is mean deviation. तो हमारा एंगुलर डिस्पर्शन तक तो हो गया डिफाइन। नाउ लेट अस से व्हाट इज मीन डेविएशन।
Okay, so yellow color is practically taken to be mean, taken to be or chosen to be, okay, chosen to be mean of mean color for red and violet, right? So the deviation of yellow color is called as mean deviation, right? Therefore delta y is equal to delta v प्लस डेल्टा आर बाई टू, क्योंकि हम लोगों ने वॉलेट और रेड का मीन येलो को माना है, बट डेल्टा वाई हमको पता है ए टाइम्स ऑफ म्यू वाई माइनस वन, इक्वेशन नंबर 4. Okay, so equation 4 gives mean deviation. Therefore equation 4 gives mean deviation, right? Then next thing that we need is dispersive power. And as I told you, dispersive power मतलब it is the ability of a prism to disperse white light or polychromatic light into its constituent colors, and it is defined as the ratio of angular dispersion to that of mean deviation. Okay, so the ability of a prism या फिर of an optical material भी बोल सकते हो, of a prism to disperse white light into its constituent colors is its dispersive power. Okay, but this is not formal definition. Formal definition is dispersive power is defined as the ratio of dispersive power is defined as the ratio of angular dispersion to the mean deviation. Okay, therefore dispersive power denoted by omega is equal to angular dispersion delta upon mean deviation delta y, and if you remember, this delta was delta v minus delta r upon delta y, or omega is equal to capital delta was also a times of mu v minus mu r, क्योंकि if you remember हमने अभी भी लिखा था mu v minus mu r into a upon a times of, क्योंकि डेल्टा y क्या है, a times of mu y minus 1, cancel cancel, therefore
omega is equal to delta v minus delta r by delta y. It is also equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1. So this is the formula for dispersive power. And as you can see, it is the ratio of similar quantities, so it is dimensionless. Correct? Good. So I am not going to write a lot. I'm just going to write what is important for us. That is what is important for us, right? Okay, then enough sufficient for the day. We will stop here.